of the chapter friction. So I think in the class we deal about static friction, kinetic friction and limiting friction. And we know that the friction which comes into play when the body is at rest is called static friction, and when the body starts moving or rolling, that friction is known as limiting friction. That is the maximum value of static friction is known as limiting friction just before the condition for motion, or when the body just starts sliding, that type of friction is known as limiting friction, and that is the maximum value of static friction. And when the body is in motion, in that situation the force of friction is called as kinetic friction. So now we are going to discuss about laws of limiting friction. So you already know the static friction. Now we discuss about laws of limiting friction. The limiting friction is the maximum value of static friction, and when the body starts just before the motion, just slide, when the body just move or slide, that type of friction is known as limiting friction. The first law for limiting friction is the direction of limiting friction is always opposite to the direction of motion. Okay. The direction of it is the monoid limiting friction direction sadabare opposite to the direction of motion. Okay. Second hela the value of limiting friction. The value of limiting friction depends upon the nature and state of police between the body and the surface, between the body and the surface in contact. Okay. First is the direction of limiting friction is always opposite to the direction of motion, and second is the value of limiting friction depends upon the nature and state of police between the body and the surface in contact. The limiting friction सबुबेले motion रो विपरीत दिगरे आसीबो एवं limiting friction रो value रे nature and state of police केते police करा जाईछि surface टा ता ऊपर डिपेंड करिवो. ओके. तो ये थिला दीटा नियम. नेक्स्ट है the value of
the magnitude of limiting friction, the magnitude of limiting friction directly proportional to the normal reaction. Okay. तो limiting friction रो magnitude टा normal reaction से directly proportional ता माने जते पर्यंत normal reaction change न हिची limiting friction रो value change होबो नाही बुझी पाले normal reaction change न होले limiting friction रो value change होबो नाही ताले that is limiting friction FL directly proportional to the normal reaction or force of limiting friction directly proportional to M into G. तो ये समय पर्यंत नॉर्मल रिएक्शन चेंज हेई नाही तो सेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन रा वैल्यू चेंज होबो नाही और लास्ट है magnitude of limiting friction is independent of shape and size of the surface in contact. Okay. So these are the laws of limiting friction. So limiting friction रो magnitude टा surface रो shape and size पे depend करे नहीं. So these are the laws of limiting friction. तो ये बात थिला limiting friction रो नियम प्रथम टा थिला जे फ्रिक्शन सब बेले ऑपोजिट आसीबो मोशन को सेकंड थिला लिमिटिंग फ्रिक्शन द नॉर्मल रिएक्शन ऊपर डिपेंड करे जते समय पर्यंत नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट रही छी लिमिटिंग फ्रिक्शन चेंज होबो नाही और सेकंड कथा हैला मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन द शेप एंड साइज ऊपर डिपेंड करे नाही जते समय पर्यंत नॉर्मल रिएक्शन फिक्स अछि From direction of limiting friction is along the tangent to the surface in contact. So last time direction of limiting friction is along the tangent to the surface in contact. Okay. The limiting friction रो magnitude का depend करे तर direction है along the tangent to the surface in contact. तो tangent जोड़े आसीबो तो से कोडे हैला तर direction आसीबो. Okay. Next हैला coefficient of friction. ये थिला laws of limiting friction. Next हैला आपनकर coefficient of friction. Coefficient of friction. So what is coefficient of friction?
friction. Now coefficient of friction between two surfaces in contact is defined as the ratio between the force of limiting friction to the normal reaction. तो हम देखिले जे force of friction F is directly proportional to the normal reaction. इटा हम लिखि परिबा implies that force of friction is equals to some constant into normal reaction. तो implies that mu is equal to force of friction divided by normal reaction. So here mu is a constant of proportionality. Constant of proportionality known as coefficient of friction. Okay, तो mu है एठी गोटे proportionality constant जाको हम coefficient of friction बोली कहि थाओ. बुझि पाले ताले coefficient of friction रो डेफिनेशन कोन हबो ना इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन force of friction to the normal reaction. यदि हम force of friction और normal reaction रो रेशियो बाहर करिबा जहां आसिला सेटा हैला आपनकर coefficient of friction. Okay, चले तले हम जरा डेफिनेशन लिखि पाइबा. तो hence coefficient of limiting friction is defined as the ratio between force of friction to the normal reaction. That is your mu L, coefficient of limiting friction, force of friction divided by normal reaction. Similarly, coefficient of static friction mu S is equal to force of friction divided by normal reaction. Limiting friction divided by normal reaction, static friction divided by normal reaction, and coefficient of kinetic friction मिला kinetic friction divided by normal reaction. This is the coefficient of static friction, coefficient of limiting friction, coefficient of kinetic friction. तो सबुथिरे रेशियो कैलकुलेट करा छिबो. तो जेहेतु static friction is greater than kinetic friction, the since static friction is greater than kinetic friction, जेहेतु static बॉडी रेस्ट अछि से मोशन करले फ्रिक्शन बहुत अधिक अछि. तो static friction ला kinetic friction रो अधिक तेणु hence coefficient of static friction is greater than coefficient of kinetic friction. जेहेतु static friction ला kinetic friction तो अधिक अछि सेति पई coefficient of static friction ला अधिक आसीबो coefficient of kinetic friction पाखरु. ओके,
coefficient of friction, coefficient of kinetic friction, coefficient of static friction. Next is the angle of friction. Next is आपनकर angle of friction. कौन? The angle of friction is the angle which is the resultant force of limiting friction. It is the angle between. It is the angle between resultant force of limiting friction resultant force of limiting friction. It is the angle between resultant force of limiting friction and the normal reaction. And the normal reaction तो वर्तमान कहा गया भितर एंगल रिजल्टेंट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन भितर जो एंगल दा ताको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोली कहि थांती बुझी पाले देखो এটা হলো একটা সারফেস এইটি গোটে বডি আছে মনে করন্তু অ্যাপ্লাইড ফোর্স এই ডিরেকশন রে আছে তো মোশন আগুয়াড় কো হোছি তা মানে হলা আপনকৰ ফ্রিকশন টা পছড় আসিব এইটা তার হলা ওয়েট mg ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড এইটা তার আপনকৰ নরমাল রিঅ্যাকশন n ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড তো আমি কইলে ফোর্স অফ ফ্রিকশন আর নরমাল রিঅ্যাকশন এর রিজাল্টেন্ট तो एटा गोटे फोर्स y एक्सिस रे अछि एटा गोटे फोर्स नेगेटिव x एक्सिस रे अछि तो अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रेडिशन एटा हैला ए बीटा फोर्स रिजल्टेंट जोड़ा तांकर कॉमन पॉइंट देबी जाई छी तो ए रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन संगे ए एंगल होछि थीटा तो एटा को हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोली कहि थाउ व्हिच इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन makes with the normal reaction जदि आपण इठी गोटे परपेंडिकुलर टाणिबे इठी गोटे परपेंडिकुलर टाणिबे ताहाले सीटा गोटे ट्रायंगल हे जाउछि एटा धरंतु a एटा धरंतु c एटा धरंतु b एटा धरंतु o एला आपण o b c गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हे जाउछि एवं सेही राइट एंगल ट्रायंगल रो tan थीटा हैला bc / ob तो वर्तमान in right angle triangle OCB आपनकर tan theta is equals to BC by OB ठीक আছে height by base BC by OB तो BC जहाँ आपनकर OA हैला सैया आपनकर OB जहाँ AC हैला आपनकर सैया OA डा हैला फ्रिक्शन और आपनकर OAC
बुझिपारे ताहले आपनकर tan थीटा इज इक्वल्स टू केते हे गला हमर tan थीटा इक्वल्स टू फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन तो अगर थीटा इक्वल्स टू कौन हे गला ना tan इनवर्स f by n और अपन लिख परिबे tan इनवर्स friction by mg. So this is the formula to calculate the angle of friction. So this formula रे हम angle of friction calculate करि पारिबे और अपन लिख पारिबे f by n हला mu तो अपन आपको एमती में लिख पारिबे it is your coefficient of friction is equal to tan of the angle of friction mu equals to tan theta एटा अपन mu नहीं पारिबो कारण फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन हला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो वर्तमान एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोन ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन हला आपनकर एटा गोटे बॉडी अछि तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन रो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन संगे एटा हला फ्रिक्शनल फोर्स एपटे काम बोला एटा हला नॉर्मल रिएक्शन एटा हला पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट तो ए लाइन दा ए नॉर्मल लाइन सहित जेति एंगल बढिची तार tan थीटा को हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोली कहि था सेटा हला एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेटा tan थीटा आसुची ओके एटा हला एंगल ऑफ फ्रिक्शन बुझियला